Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Mehreen Qasim from PMEI school system. Today we are going to discuss the grammar exercise from unit number 3, Dreams, lecture number 4. And the topic which we have for today is transitive and intransitive verbs. That is on page number 26 in your book. But remember one thing that you should know and learn the theme of the units. And the theme of this dream poem is ambition. Transitive and intransitive verbs. ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं उससे पहले जानना चाहिए आपको कि वर्ब्स क्या होते हैं. व्हाट आर वर्ब? वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. A verb that does not make sense on its own in a sentence and requires an object is called a transitive verb. Transitive verbs वो verbs होते हैं जिनको object की ज़रूरत होती है. Transitive transition से निकला है जिसका मतलब ये होता है कि जिसको एक object की ज़रूरत हो अपना action complete करने के लिए. Okay. Let's have some examples. The shelf holds the books. The shelf is a subject, holds is a verb, and the books is a direct object. Rubina is eating a burger. Rubina is a subject, eating is a verb, and a burger is an object. What happened to the burger? Rubina is eating a burger. और उसका जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो बर्गर रिसीव कर रहा है और इसके नतीजे में क्या हो रहा है, इन द रिजल्ट क्या हो रहा है, बर्गर ख़त्म हो रहा है. या शी ईट्स एन एप्पल. व्हाट हैपन टू द एप्पल? एप्पल को क्या हुआ? शी हैज़ ईटन एन एप्पल. वो सेब खा गई है. रिसीवर ऑफ एन एक्शन जो है वो सेब है और नतीजे में क्या हुआ कि वो ख़त्म हो गया. तो एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन एंड रिसीवर ऑफ एन एक्शन जो है ट्रांजिटिव में सेंटेंसेस में होना ज़रूरी है जो कि एक्शन को रिसीव करे. इफ़ आई सेड द मैन लव्स हिज चिल्ड्रन, यहाँ पे जो आदमी है वो सब्जेक्ट है, लव्स जो है एक्शन दैट इज़ परफॉर्म बाय द मैन और रिसीवर ऑफ एन एक्शन जो है वो है चिल्ड्रन. ओके, इसको थोड़ा सिंपली समझते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट. इफ़ आई सेड वी बिल्ड अ हाउस, हमने घर बनाया. अगर मैं ये कहूँ कि ये एक मुकम्मल ख़याल है, तो हाँ ये एक मुकम्मल ख़याल है. अगर मैं कहूँ वी बिल्ट, हमने बनाया, तो अब इसके लिए रिसीवर होना ज़रूरी है. हमने क्या बनाया, इसके लिए ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है. वी बिल्ट अ हाउस. वी इज़ अ सब्जेक्ट, बिल्ड इज़ अ वर्ब. तो अब इस वर्ब के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए. तो डेफिनेटली दिस इज़ एन ट्रांजिटिव वर्ब. दिस इज़ ट्रांजिटिव वर्ब. ही गेव मनी टू द ओल्ड मैन. अब ऑब्जेक्ट या मनी किसको मिली? सो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है. जब इस जुमले से गेव वर्ब निकाल दें तो क्या ये मुकम्मल बात या मुकम्मल जुमला होगा? नहीं, क्योंकि दिया के साथ, एक्शन के साथ कुछ ऑब्जेक्ट भी ज़रूरी होता है. इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑपोजिट हैं. Means intransitive verbs are those verbs which does not need an object to complete their meaning. A transitive verb is a verb that accepts one or more objects. A transitive verb needs to transfer its action to something or someone, an object. In essence, transitive means to effect something else, definitely, जो कि असर को कबूल करेगा
वो ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। एक और ट्रांजिटिव में आप एक बात याद रखिएगा हमेशा कि अगर ट्रांजिटिव में वर्ब के बाद आपके पास नाउन आ जाता है तो वो सेंटेंसेस जो होते हैं वो ट्रांजिटिव हैं। लेकिन अगर वर्ब के बाद जो है, अगर वर्ब के फ़ौरन बाद आपके पास प्रेपोजिशन या एडवर्ब आ जाए तो वो ट्रांजिटिव नहीं होंगे, वो इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस होंगे, राइट। अगर वर्ब के फ़ौरन बाद नाउन आ जाए तो वो ट्रांजिटिव में चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर वर्ब के फ़ौरन बाद प्रेपोजिशन या एडवर्ब आ जाए तो वो इंट्रांजिटिव होते हैं। ही ईट्स मैंगोज, अब ईट्स के फ़ौरन बाद मैंगोज नाउन आ गया है तो इट कैन चेंज इनटू पैसिव सेंटेंस। ये पैसिव सेंटेंस में चेंज होगा, रिसीवर ऑफ एन एक्शन मौजूद है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है। ही राइट्स क्लियरली, यहाँ पे एडवर्ब आ गया है, सो इट मीन्स कि ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। आई लाफ्ड एट हिम, यहाँ पे भी हमारे पास वर्ब के फ़ौरन बाद प्रेपोजिशन आ गई है, सो इट मीन्स कि ये इंट्रांजिटिव सेंटेंस है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। Let's have some examples here. Number 1 है Ali reads transitive verb. Ali reads a book. So reads here is a transitive verb while a book is a direct object that is receiving an action, right? Ali reads a book. Ali action कर रहा है और वो action क्या है? वो reading है. He gave a rupee to the beggar. अब यहाँ पे he gave is an action. A rupee, that is a direct object to the beggar. She left the keys on the table. She left, that is transitive verb. उसने छोड़ दिया, क्या छोड़ा? कुछ ना कुछ तो होना ज़रूरी है इसके बाद, क्योंकि उसने एक अमल किया जो कि छोड़ने का है। The keys, उसने अपनी चाबियाँ छोड़ दी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, on the table. Intransitive verb, a verb that indicates complete action by itself in a sentence and does not require an object. It is called an intransitive verb. Adverbs and prepositions usually follow intransitive verbs. ये याद रखना है कि जो intransitive verbs होते हैं उनके फ़ौरन बाद जो है हमारे पास या तो adverbs होंगे या prepositions होंगे, और अगर ये आ जाएं तो वो intransitive verbs होंगे. If I said my sister cries loudly, so here my sister is a subject, cries is an intransitive verb, and loudly is an adverb. A transitive verb is incomplete without a direct object, whereas an intransitive verb makes complete sense without a direct object. We watched. I jumped in excitement. Okay. An intransitive verb is simply defined as a verb that does not take a direct object. That means there is no word in the sentence that tells who or what received the action of the verb. आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि transitive verbs are those verbs which needs an object to complete their meaning, while intransitive verbs are those verbs that do not need an object to complete their meaning. Examples are: number 1, the sun rises in the east. Intransitive verb, action has stopped here. The sun rises in the east. In आ गया, so it means preposition, as I told you, तो ये intransitive verb हो गए. Someone was coughing, intransitive verb, loudly. Action के फ़ौरन बाद adverb आ गया. His grandfather died suddenly last week. Intransitive verb again. While there may be a word or phrase following an intransitive verb, such words and phrases typically answer the question how long, where, and when. Like examples are: the sun rises in the east. Someone was coughing loudly. His father died, intransitive, suddenly last week. Thank you so much. This is it for today. Hopefully this lesson was very helpful for you.